Hello everyone, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see Anaphora figure of speech. इसके हम 50 examples देखने वाले हैं with detailed explanation. Now let's begin. सबसे पहले हम देखते हैं definition of Anaphora. क्या है exactly इसकी definition? बहुत simple figure of speech है ये. देखिए, Anaphora is the repetition of word or phrase at the beginning of successive clause, sentence और line. किसी भी clause के पहले, sentence के पहले, line के पहले, मतलब उसकी जो beginning होती है वहां पे कुछ ऐसे phrases होते हैं, words होते हैं छोटे छोटे या phrases हो सकते हैं, वो जो repeatedly हम use करते हैं उस sentence में, उस phrase में या फिर उस वो छोटा सा paragraph हो उसमें, तो उसे कहा जाता है anaphora. Now explanation in detail. Anaphora is used to create, emphasize, build rhythm and evoke strong emotional effect in writing or speech. जो भी स्पीच हम राइट कर रहे हैं, जो भी स्पीच दे रहे हैं या फिर जो भी राइटिंग हो रही है, तो उसमें कुछ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स का यूज किया जाता है क्योंकि उसको एम्फसाइज करना है या फिर वहां पे कुछ रिदम क्रिएट करना है या कोई इमोशनल चीज हमें अच्छी तरीके से बतानी हो, तो वहां पे उस रिपीटेशनल वर्ड का यूज किया जाता है. बाय रिपीटेटिंग अ की वर्ड और अ फ्रेज, the speaker or writer draws attention to central theme or idea. जो भी कुछ हम लिख रहे हैं उसका जो central theme हो, उसकी idea हो, जो story हो, जो कुछ भी वो story की तरफ हम attract हो या फिर वो अच्छी तरीके से समझे, इसके लिए हम anaphora use करते हैं. Making it more memorable and impactful, it is often used in. तो इसका use कहाँ पे होता है? बहुत बार political speeches में, रिलीजियस टेक्स्ट में, पोएट्री में, लिटरेरी प्रोज में, तो यहां पे वो रिपीटेडली यूज होता है, तो उसे कहा जाता है एनाफोरा. नाउ पर्पस ऑफ एनाफोरा, चार पर्पस दिए, देयर आर 4 टाइप्स. फर्स्ट है एम्फसाइज. रिपीटिंग वर्ड्स हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट आइडियाज. जो रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं वो हाईलाइट क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट आइडियाज क्या है उसकी तरफ. सेकेंड, रिदम. The repetition creates a lyrical rhythmic flow. Third, unity. It links multiple sentences or thoughts together under a common idea. Fourth, emotional effect. Repetition can stir emotional and drive a point home. Understood? Now, examples ऑफ एनाफोरा. एनाफोरा की कुछ एग्जाम्पल्स देखिए जो कि हम लिटरेरी 50 एग्जाम्पल्स तो हम अलग से लेने वाले हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखिए. फर्स्ट, फ्रॉम लिटरेचर. लिटरेचर में देखिए ये एग्जाम्पल यूज हुआ है. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस. चार्ल्स डिकिंस जो है उन्होंने अ टेल ऑफ टू सिटीज, उसमें इस इट वॉज, ये जो फ्रेज है, मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें वो पूरे फ्रेज में देखिए तो इट वॉज ये रिपीटेडली यूज किया, तो यहाँ पे एनाफोरा ये यूज हुआ है. द फ्रेज इट वॉज इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्लॉज. हर क्लॉज के पहले इट वॉज रिपीटेड हुआ है. सेकेंड, फ्रॉम अ स्पीच. स्पीच में कैसे यूज होता है देखिए. आई हैव ड्रीम दैट वन डे, I have a dream that my 4 little children. I have a dream today. मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे उन्होंने ये फ्रेज यूज की थी. रिपीटेशन ऑफ I have a dream stresses his vision of civil rights. उनकी जो विजन थे सिविल राइट्स के, उसके लिए उन्होंने I have a dream इसका यूज किया था. नाउ नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल फ्रॉम पोएट्री. पोएट्री में देखिए, every day, every night, in every way, I am getting better and better. Emily Coe. उन्होंने ये फ्रेज यूज की है यहाँ पे. रिपीटेशन ऑफ एवरी, emphasize consistency and self belief. Understood? Now, etymology. अभी देखिए एटमोलॉजी क्या मतलब. ये जो वर्ड आया था एनाफोरा, ये कहां से आया देखिए. द वर्ड एनाफोरा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एनाफेरियन
meaning to carry back. This reflects how the repetition brings the listener or reader back to the same starting point or emphasis. Understood? Now, एनाफोरा वर्सेस अदर फिगर ऑफ स्पीचेस, जहां पे हम एनाफोरा का अदर फिगर ऑफ स्पीच से कंपेयर करेंगे. देखिए, एनाफोरा रिपीटेशन एट बिगिनिंग, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन लैंडिंग ग्राउंड्स. एपिफोरा repetition at ending, at end, see no evil, hear no evil, speak no evil. Simples, repetition at both beginning and end, when there is talk of hatred, let us stand up and talk against it. When there is talk of violence, let us stand up and talk against it. Understood? Now 50 एग्जाम्पल्स ऑफ एनाफोरा. हम यहाँ पे 50 एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं ताकि आपको एनाफोरा ये जो कंसेप्ट है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी. देखिए, आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट अ हाउस, आई वॉन्ट पीस. सेकेंड, शी सेड शी लव्ड हिम, शी सेड शी मिस्ड हिम, शी सेड शी नीडेड हिम. थर्ड, we will win, we will rise, we will conquer. Fourth, he came, he saw, he conquered. Fifth, they don't care about us, they don't care about the truth, they don't care about justice. Sixth, this is my dream, this is my hope, this is my future. Seventh, every day I wake up, every day I try harder, every day I move forward. 8. I believe in love, I believe in kindness, I believe in hope. 9. We are strong, we are united, we are unstoppable. 10th, you can cry, you can scream, you can heal. Next देखते हैं. It's not over, it's not easy, it's not end. Next, no one listened, no one cared, no one stayed. Next, he always smiled, he always he always smiles, he always helps, he always cares. Fourth, this is our time, this is our fight, this is our victory. Fifth, I'm not afraid, I am not tired, I'm not giving up. Next, you will fall, you will fail, you will rise. Next, in the night I dream, in the night I cry, in the night I hope. Next, she can run, she can fly, she can win. Next, I have seen war, I have seen peace, I have seen change. Next, we remember the pain, we remember the past, we remember the promise. Next, देखिए, there is love, there is loss, there is life. Next, don't stop believing, don't stop trying, don't stop dreaming. Next, he never quits, he never complains, he never backs down. Next, let them talk, let them laugh, let them go. Next, my heart is broken, my heart is tired, my heart is healing. Sixth, still I rise, still I hope, still I believe. Next, we fight for truth, we fight for love, we fight for freedom. Next, everyone said I couldn't, everyone said I wouldn't, everyone said I shouldn't. Next, just keep going, just keep believing, just keep dreaming. 10th, you are strong, you are brave, you are enough. Next देखते हैं 50 examples. Time will heal, time will teach, time will reveal. Hope is alive, hope is near, hope is real. Next, fear is loud, fear is heavy, fear is temporary. She runs, she laps, she lives. Let me go, let me breathe, let me leave. I can't stop, I can't wait, I can't lose. When we fall, when we hurt, when we learn, it hurts now, it hurts deeply, it hurts truly. Never forget your roots, never forget your values, never forget your dreams. Always be kind, always be humble, always be honest.
Understood? Next day, we must try, we must trust, we must stand. Next, he feels pain, he feels doubt, he feels hope. You gave me love, you gave me light, you gave me life. I told the truth, I told my story, I told my heart. Light shines in darkness, light shines in hope, light shines in love. Everything changes with time, everything changes with loss, everything changes with love. The world is big, the world is cruel, the world is beautiful. Nobody knows the pain, nobody knows the strength, nobody knows the truth. Next, I saw the stars, I saw the moon, I saw the light. Last, he fights for peace, he fights for honor, he fights for all. Understood? Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you very much.